Good evening. Welcome to this edition of Northeast Diary. Here we bring you the latest developments from India's unexplored Northeast region. Today we will talk about the expansion of the infrastructure projects going on in the Mizoram University. We will also go to Meghalaya, where awareness programs have been held for the youth regarding job opportunities in Japan. In Dibrugarh, the Department of Psychiatry, Assam Medical College and Hospital has recently launched a helpline for suicide prevention. Telling us more about this initiative is our Dibrugarh correspondent Pranab Kumar Nath. Department of Psychiatry, Assam Medical College and Hospital, Dibrugarh has recently launched a helpline number 7099021108 for prevention of suicide. Named as AMI ASU, an abbreviation of Assam Medical College Initiative to Abort Suicide, and simultaneously local language, it means we are here. The helpline was launched as a part of Platinum Jubilee celebration of the medical institution. The telephonic helpline for information and counseling to abort suicide remains open initially from 10 a.m. to 8 p.m. daily. Addressing in the launching program, the head of the Department of Psychiatry, Dr. Hirendra Kumar Goswami, said, by the end of 2022, depression will be the second largest disease in the world, and suicide is closely linked to depression. Moreover, frustration is another cause of suicide. If anybody wishes to die due to depression, that should be taken very seriously, which is a big warning sign of suicide. The derivation of the Nobel Initiative came in the mind of faculties of Psychiatry Department Dr. Drupajyoti Bhuiya, Dr. Sabita Dihingia and others from a recent sad incident of suicide of a class 9 girl in Guwahati. They planned for a helpline number where assistance, counseling, treatment will be given to prevent suicide. Moreover, the helping psychiatry team in involvement with other medical department of medical college is committed to support the patients with incurable complications admitted in hospital campus who often gets depressed and wishes to die. The helping team will also monitor this with support of family members on those who attempted suicide but failed. The endeavoring team has also dedicated the Nobel Service of Suicide Aborting Helpline as Guru Dakshina to Departmental Head Dr. Goswami, who will retire from the service shortly. For Northeast Diary, this is Pranab Kumar Nath from Dibrugarh. Nagaland is all set to host the South Asian Cross Country Championships and the 56th National Cross Country on the 26th of March at the Indira Gandhi Stadium in Kohima. The South Asian Cross Country Championships and the 56th National Cross Country will be the first ever international athletics event to be held in the state of Nagaland. Let's know more on the preparations of the event from the Associate Vice President of Athletics Federation of India and President of Nagaland Athletics Association, Mr. Abu Mehta. We are thankful to the Government of Nagaland under the Chief Minister Nephew Bio for coming forward, giving mandate for host this event and for coming forward with full all-out support and sponsorship of this event. We are expecting participants from every affiliated state of India, every affiliated union territory, and other sports like the railways, the services, etc. We have also received confirmation of participation from all the South countries, and formalities are underway to clear their visas and their permits for them to come and participate here. This is going to be perhaps Nagaland's biggest ever sporting event in our 50 plus years of statehood. The Honorable Chief Minister, who is also the convener of the organizing committee and the President of the Olympic Association, has sent out invites to a number of delegates and dignitaries. We have invited the Union Minister of Sports and Youth Affairs, Mr. Anurag Thakur, to be one of the honored guests. So far we have received a positive response from him. Stars like former world champion Anju Bobby George, former Asian champion P.T. Usha are expected to arrive before the event, participate in the event, and also interact with young sportspersons from Nagaland and the Northeast. It is not only Kohima and Nagaland which is hosting this landmark championship, but we must keep in mind that India is hosting the championship. Nagaland is doing India's duty to host this championship. We are looking forward to a successful, unique, and a very different championship compared to the others. We hope it will be a grand success. Meanwhile, the official mascot of the South Asian Cross Country Championships and 56th National Cross Country is a joyous, happy running hornbill, and the name of the mascot is Akimji, a connotation of the word ambition derived from Sumi dialect of Naga tribe, which exemplify the ambition of the new generation of Naga youth. This is Asunyo from AIR News Kohima for Northeast Diary.
With the central government's initiative to boost international transportation between India and Bangladesh, Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, announced 25 crore rupees for dredging in the river Gomti for setting up altogether 10 jetties for better inland waterways connectivity. A report from our Agartala correspondent, Reena. The Union Minister said that these new initiatives will boost international transportation between India and Bangladesh in the form of the cargo vessel, passenger vessels and river cruise movements between the neighboring countries. The Union Minister said, हमारे Inland Waterways Authority of India, त्रिपुरा सरकार, लैंड पोर्ट अथॉरिटी तीनों के बीच में एक समझौता हुआ है। इसके जरिए गोमती नदी पर 10 जेटी बनेगा और 10 जेटी के वजह से रिवर क्रूज, टूरिज्म इंडस्ट्री, पैसेंजर वेसल, कार्गो वेसल का मूवमेंट होगा। बांग्लादेश का साथ हमारा इंडिया और बांग्लादेश का बीच में व्यापार वाणिज्य अधिक उसको गति मिलेगा। तो उसी दिशा पर आज 25 करोड़ का भारत सरकार की सहयोग से ये जेट्टी बनने जा रहा है और आसपास में और भी बचे हुए नदी पर भी अध्ययन होगा, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होगा और उसकी फिजिबिलिटी की आधारित अगले दिनों में कार्यक्रम हाथ में लिया जाएगा। Apart from that, the Union Minister, who also holds the Ayush Ministry, said that a total of 50 health and wellness centers have been sanctioned and a 50-bedded integrated Ayush hospital would also be open here in Tripura. For Northeast Diary, this is Reena Nongmaitem from Agartala. Awareness on cybercrime was among the highlights of the recent Financial Literacy Week 2022 organized by the Reserve Bank of India in Gangtok, Sikkim. We have a report. Inaugurating the Financial Literacy Week 2022 theme, Go Digital, Go Secure, Sikkim Governor Ganga Prasad shared the importance of financial literacy at the grassroots level and urged people to consult bank officials to clarify doubts about the digital finance system and go gain to better understanding of security of digital transactions. Superintendent of Police Crime Branch CID Sikkim Panjing Loden Lepcha briefed on various aspects of cyber security and cyber fraud associated with fast digital developments and outreach and awareness programs to fight cybercrime. In 2020, we initiated something called as Mission Safari, Sikkim Against Fraud Action Initiative. Usually cybercrime complaint comes after, if the money is siphoned off, after 3 days, 4 days, 5 days, the complainant would come to us. Is within those 5-6 days, the money that has been transferred from the victim's account to a second account, that again has been transferred further to X number of accounts. So it becomes difficult for us to, tell the victim that it is next to impossible for us to get the money back to you. So we have created this awareness program in which a lot of the bankers are here and some of them have also helped us. The initiative basically was we would create 2-minute animated videos on various scenarios. And then we would use social media, WhatsApp, Facebook, to propagate them to the masses. And these videos are made in English as well as in Nepali. In Sikkim, we have had more than 100 people coming to my office with this particular campaign. So the idea is create as many scenarios as possible. And then, these scenarios when they see this, they are able to understand this is how they are being cheated. The program also highlighted the larger positive aspect of digital financial service with Saikat Sarkar. This is Dilli Ramdulal for Northeast Diary from AIR News Sikkim. One of the most reputed central universities in the Northeast region is the Mizoram University. With the passage of the last 20 years, Mizoram University has made considerable progress in terms of infrastructure and academics. The university is ranked within the top 100 universities in the country. In the last few years, the MZU has taken many initiatives for excellence in academics. Recently, new feathers have been added to the cap of Mizoram University. For more details, we go over to our correspondent from Aizawl. Recently, the Ministry of Human Resource Development has sanctioned 6 projects for this university. Governor Hari Babu Kambhampati has laid the foundation stones for these projects. He acknowledged that despite being a relatively young university, MZU has become one of the better universities in the country. Given the present situation, Governor Kambhampati emphasized upon the need for skill development programs and appealed to faculties to produce job creators instead of educated job seekers.
The governor also highlighted the aptness of the National Education Policy NEP 2020, which has been framed to make India a global knowledge superpower. He said that the policy has been designed in such a way that it meets both the local and global needs of the country. He said that the new Education Policy 2020 would drive India to become economically self-reliant and a modern new India. According to officials of the university, there will be 4 projects inside the MZU campus and 2 projects in Pathunga University College. Within the MZU campus, 1 boys' hostel with a capacity of 100 seats, 2 girls' hostels with capacity of 100 seats each, and 1 academic building will be constructed. While in Pathunga University College, 1 academic building and 1 boys' hostel with a capacity of 50 seats will be constructed. It is noted that Mizoram University is accredited A grade by NAAC. The Times Higher Education Impact Rankings 2021 claims that MZU is ranked 21 in the country and secured first place in Northeast India. For Northeast Diary, this is Irene from Aizawl. With an aim to spread awareness about the plethora of job opportunities available in Japan for Indian youths, the Japan Center of Excellence based in Guwahati held an awareness program in Shillong to sensitize the youth of Meghalaya on various job opportunities. A report from a Shillong correspondent. The program was held at Belfort Community College, located in Lumshiap, Shillong, and witnessed a good participation from a large number of young girls. The Japan Center of Excellence has been formed with a vision to create a world-class workforce with skill sets, work and business ethics, sincerity and devotion, as well as other great positive traits found in the Japanese workforce, which has been responsible for having built world-class enterprises. For the Indian students and youth stepping into this world, the objective is to provide life-changing opportunities in the form of skill and work in Japan. Rajiv Gupta, a member of the Japan Center of Excellence, said that the program was held not only with the objective of helping youth to widen the horizon of possibilities pertaining to their careers, but also towards strengthening the Indo-Japan relationship. We run a Youth for Japan program under our organization, which is Japan Center of Excellence, a DIPT registered startup based out of Guwahati. The objective of this program today is to sensitize the youth, especially the youth of Meghalaya, on the opportunity that Japan offers in terms of employability in the caregiver job category in Japan. The youth today are either employable or non-employable, and unemployment is growing at a very fast rate. Japan is an aging society and therefore requires a large amount of youth in that country. This program, it gives them an idea of the potential of savings that they can do over a period of 3 to 5 years and the impact that they can create on their society, on their family, and overall their state, etc. This is Rustam for Northeast Diary from AIR News, Shillong. चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे. Sandhya Gurung, a former boxer from Sikkim and now the state's first Dronacharya awardee coach, fought paralysis to first become a national-level boxer and then a famous name in the country's boxing circles, both as a boxer and a coach. In an interview with Northeast Diary, Mrs. Gurung shares some highlights of her own journey. The interviewer is Usha Sharma, newsreader, Gangtok. What marked the beginning of your association with boxing? जब मैं छोटी थी तो मैं खेल पसंद करती थी और बहुत किस्म का खेल खेलती थी, लेकिन ये बॉक्सिंग कभी भी नहीं सोची थी मैं बॉक्सिंग करूंगी बोलकर.
शादी होने से पहले मैं जब स्कूल जाती थी तो मैं पैरालाइज्ड हो गई थी। 3 साल बिस्तर पर लेटना पड़ा। तो उसके बाद में जब ठीक हो गए, मेरा मतलब शादी हो गई मेरे, जब वहाँ एक आर्मी मैन था, जब वो रिटायर होकर आ गया तो उसके बाद में उनके साथ में जब मैं डिस्कस करने लगी कि मैं भी बॉक्सिंग करूंगी ऐसे ऐसे करके, तो उसने बताया कि आप अभी तो बहुत मोटी हो गई हो, तो आपका थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो सुबह उठकर थोड़ा आप टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं उस टाइम 68 kg की थी। तो ऐसे हम दोनों सुबह जाकर मॉर्निंग वॉक में जाती थी। फिर बातों बातों में मैं भी बॉक्सिंग करूँ, थोड़ा बहुत सिखाया करो ना। तो मैं रास्ते में ऐसे जब थोड़ा सुनसान जगह में मैं 1-2 सिखाने के बोलती थी तो सिखाता था। तो बातों में उसने बोला कि वुमेन बॉक्सिंग तो अभी नहीं है, तो अगर होता तो मैं खेलती थी। उसने बताया कि आप तो खेल नहीं पाएगा क्योंकि आप तो पैरालाइज मतलब है, पहले हो चुके हैं, तो नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी तो मैं ठीक हो गई हूँ, मैं खेलूंगी, कुछ नहीं होगा। अगर बाद में कुछ मतलब वो डरते थे हमेशा कि बॉक्सिंग करने से कुछ हो ना हो जाए, तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, आप डरना नहीं। तो बाद में फिर दूसरा उसने बताया कि ये तो लड़कों का गेम है, लड़कों सिर्फ खेल सकते हैं, लड़की तो मुश्किल है। मैंने बोला लड़का लड़की में क्या फर्क है, अगर खेलने के लिए ठाने लिया तो क्यों खेल नहीं सकती, लड़का खेल सकते हैं तो लड़की भी खेल सकती है। तो इसी तरह रसराज पर्दन सर है जो अर्जुन अवार्डी है, ओलंपियन रिप्रेजेंट है, तो उन दोनों एक साथ में रिटायर आया था। तो आने के बाद यहाँ पर बॉक्सिंग स्टार्ट किया दोनों ने, तो उसी तरह मतलब स्टार्ट हो गए। तो बाद में मैंने जब आ गया 99 में, उसने आपका एक गुड न्यूज है, बोला ना बताइए ना, तो हम फिर बताया वुमेन बॉक्सिंग भी अभी स्टार्ट हो गए, तो अच्छी बात है, मैं खेलूंगी। कैसे खेलेगा, आप तो बच्चा है, मतलब उस टाइम मेरा बेटी 9 years की थी। 2000 से जब बॉक्सिंग स्टार्ट होने वाला है तो मेरी बेटी 10 साल की थी। तो मैंने बोला बहन के साथ जाऊंगी, मेरे बहन से पूछूंगी। तो मैं चली गई और बहन के साथ में, बहन और उसका हस्बैंड भी साथ में था। तो मैंने बताया कि मैं कुछ बात करने आई हूँ, बताओ। हम इस बात करते, मैं वुमेन बॉक्सिंग स्टार्ट हो गए है, मैं खेलना चाहती हूँ, क्या करूँ। मैं से हम दोनों मतलब बात डिस्कस करने, तो मेरे बहन ने बोला कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कीजिए ना। फिर मैंने बोला तो मेरे बच्चे हैं अभी, इसलिए कोई बात नहीं है, बच्चे को मेरे साथ छोड़ दीजिए, तो आप चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो ठीक है। तो उसके बाद मैंने शुरू करने लगी। तो इसी तरह मेरे बॉक्सिंग शुरू की। तो जब मैं शुरू की थी तो मैं 27 years की थी मैं उस टाइम। तो बॉक्सिंग तो 34 तक की का लिमिट है, तो उसके आगे खेल नहीं सकती थी। तो मैं अभी मेरे तो 7 साल ही खेलना है। प्रधान सर और मेरे हस्बैंड बोला कि अभी इस जोनल हो रहे हैं कलकत्ता में, आप खेलना जाइए और थोड़ा अनुभव होगा वहाँ का, कैसे खेलना है फील्ड में। तो गांव में इतना पता नहीं था कि मैं बॉक्सिंग करती हूँ बोलकर, क्योंकि मैं छुप छुप कर करती थी। ये शर्म की बात थी कि एक तो उम्र ज्यादा हो चुकी थी, तो समाज में है एक नाम बच्चे की माँ हूँ, तो फिर मैं छुप के जाती थी। तो इसी तरह मैं खेलने गई। तो एक जो मेरा ओपोनेंट था वो एक कोच का बेटी थी, तो पहले से खेलती थी और वो तो बहुत एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी थी। तो मैं भी जितना सिखाया उतना तो खेल दिया और जोश में खेल दिए। तो 3 राउंड होते थे, तो 3 ही राउंड खेल दिए, मतलब हार गई। तो मेरा हस्बैंड और सर ने बोला कोई बात नहीं, बहुत है, मतलब ये आपका एक्सपीरियंस है, अभी आपको आगे बढ़ाना है। तो मैंने भी हार नहीं मानी, अभी मैं करना है, ये तो मेरी शुरुआत, अभी ये तो खेला, अब मैं खेल सकती हूँ बोलकर, मतलब एक जोश सा आ गया। तो जैसे मैं हारा सुनकर गाँव में थोड़ा मतलब मजाक सा करने लगा, मजाक उठाया, बुढ़ापा में खेलते हैं, ऐसे होता है वो। फिर मैं शर्म के वजह में थोड़ा मुस्कुरा कर मतलब ऐसे चलती थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी कि मैं सलाम आगे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बस आगे खेलना है मेरे। तो इसी तरह खेलते गई, नेशनल खेलने लगा, तो इंटरनेशनल मतलब नॉर्थ ईस्ट जोनल, इंटरनेशनल, तो मेडल आने लगा, तो और भी मजा आने लगा खेलने में। तो मैं पीछे मुड़कर देखी नहीं कि खेलना ही है, बस खेलना ही, एक मतलब जोश लेकर इसी तरह मैं खेलती रही। तो खेलने के बाद में फिर मैं अभी छोड़ना पड़ा, 27 से शुरू किया, तो 7 साल 34 तक खेली। तो मैं खोलना ही पड़ेगा, अभी रूल है वहाँ, तो मैं खेलूंगी बोलकर तो कोई मुझे खिलाएगा नहीं। एक मजा आते आते मुझे छोड़ना पड़ रहे हैं। तो मेरा तो सपना था कि मैं आगे जाकर बड़े कंपटीशन खेलूं, जैसे ऑफिशियल गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ऐसे बहुत गेम है, इंटरनेशनल गेम। इधर उधर होकर तो 7 साल में मैं इंटरनेशनल तो हो गई, लेकिन मजा नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बड़े कंपटीशन खेल नहीं पा रही थी। तो इसलिए मुझे फिर आगे के सोचने पड़ा। तो मुझे मतलब गेम से पीछे हटने का मन ही नहीं था, मतलब छोड़ने का मन ही नहीं था। तो मेरे हस्बैंड के साथ में हम दोनों बातचीत की। फिर मैंने बताया कि मुझे तो बॉक्सिंग से मतलब दूर होने का मजा नहीं आ रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, मैं अभी इसमें कुछ नहीं है क्या ऑप्शन। तो उसने बताया कि 2 ऑप्शन है,
आप वो कर सकते हैं, एक तो आप ऑफिशिएटिंग कर सकती है और एक तो आप कोच बन सकती हो। तो मैंने सोचा कि कोच बनने में तो थोड़ा लंबा समय लगेगा, 1 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, डिप्लोमा करना पड़ेगा, मतलब कोच होना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम हो गया। तो मैं भी सोची ना ओके मैं तब तो मैं ऑफिशिएटिंग करूंगी। तो रूल्स बुक पढ़ लिया, इधर उधर करके टेस्ट में बैठकर पास हो गया, नेशनल में स्टेट में मतलब ऑफिशिएटिंग भी की। लेकिन इसमें में इतना मजा नहीं आ रहा था कि जितना बॉक्सिंग में मजा आ रहे हैं। नजदीकी नहीं आ पा रहा है क्योंकि 6 महीने में कभी मतलब 1 साल में बॉक्सिंग के साथ में जुटना पड़ रहा है। तो फिर बाद में मैं बताया कि इसमें तो मजा नहीं आ रही क्योंकि मैं बॉक्सिंग में तो है लेकिन बॉक्सिंग में जैसे तो नहीं लग रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं कोच बनूंगी, मैं पढ़ने जाऊंगी, डिप्लोमा करने का। अच्छा है, आप अगर करना चाहते हैं तो आप जाइए। तो ठीक है, मैं चली गई पढ़ने, मतलब डिप्लोमा करके ऑनर्स करके आगे मैं वापस फिर तो इसी तरह से मतलब कोचिंग करने लगे। तो मैंने ठान लिया कि अगर मैं कोच बन गई, मैं कोच बनूंगी और मैं जो कंपटीशन खेल नहीं पाई वो कंपटीशन में बच्चों को खिलाऊंगी और वो जगह पर बच्चों को पहुंचाऊंगी। तो आज मैं पहुंचाया और मैं द्रोणाचार्य अभी मिल चुके हैं। तो ऐसे में मतलब मजा आ रहा है। Moving on, how do you appreciate your role behind Lovelina Burgohain's achievement? Also, how did you see Lovelina grow as a boxer over the years? And what are your expectations? सोचो तो लवलीना ने यहाँ तक तो कर लिए है, लेकिन जितना उसने यहाँ तक आने में सफलता मतलब करने में उसके जो स्ट्रगल की है उसी तरह उसने मतलब उसी हिसाब से वो चला। जितना उसने मेहनत की है उसी तरह से वो यहाँ से यही रास्ते इधर उधर भटके बगैर चले तो अवश्य वो आगे भी पहुंच सकते। इस बार उसने ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं तो अगली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं। वो वहाँ पर पहुंचे हैं। एक कोच को बहुत सा करना पड़ता है कि सोचने से इसको पहुंचागी, सोचकर मैं भी सोकर नहीं पहुंचा सकती। क्योंकि जब हम लोग सोते हैं लेकिन हमारे माइंड में वही आता है कि उसको कैसे कराऊं, उसको ये कराने में क्या है, कैसे मतलब इसको किस तरह से ट्रेनिंग कराऊं। मतलब हर हमारा टाइम मिनट में हमारा प्लान मतलब दिमाग में चलते रहते हैं। तो आज तो हम कैंप में जाएंगे तो सारे बच्चों के लिए सोचना पड़ता है एक तो अलग सा, और लवलीना के लिए अलग सा प्लान हम लोग करना पड़ता। तो उसके लिए बहुत प्लान करना पड़ा उसको। एक तो बेसिक से मैंने सिखाना पड़ा है। पहले बहुत ही डरती थी, वो डर के खेलती थी। नॉर्मल लड़की भी उसको मतलब मारती थी रिंग के अंदर में, तो दुखी हो जाती थी। उसको सब कुछ है, क्वालिटी है, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो उसको एक तो मैं उसको हौसला देना पड़ रही थे, पर मैंने उसको हौसला दिए कि आप ये कर सकते हैं, इतना हाइट ये कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सके। तो आप एक बार आजमा कर देखो, उसमें जाकर करो और वो जाकर होगा कि नहीं होगा उसके बाद में मुझे बोलना। तो उसी तरह से मैं बोला आप एक करो तो वो करने लगी। तो मतलब उसका डर हट गए। आपको मार लगा नहीं, इसी तरह से आप अपने टेक्निक में खेलो, कोई कुछ आपको टच भी नहीं कर सकते। तो एक तो वो उसको डर हटाने में लग गए, मतलब एक तो बेसिक से सिखाने लगे। और एक तो अब घर से दूर है, उसके मतलब घर की प्रॉब्लम है, जो माँ बीमारी है, मतलब एक बहुत सा मतलब मुश्किल है उसको, मतलब उसमें फिर उसमें जुटना पड़ रहा है, उसको सांत्वना देना पड़ रहे हैं। तो इसी तरह मतलब एक फ्रेंड है, एक सलाहकार होकर, एक साइकोलॉजिस्ट होकर, एक परिवार होकर, मतलब एक बहुत सारी भूमिका निकाल, एक कोच की तरह करके उसके यहाँ तक पहुँचाने में मतलब करना पड़ा बहुत। What are the processes an Olympic medalist has to go through? ओलंपिक के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है एक प्लेयर्स को। तो इसी तरह से अभी यहाँ पहुंचने के लिए हर कंपटीशन खेल पड़ते हैं और उसमें आकर जब क्वालिफाइड होते हैं, ओलंपिक क्वालिफाइड होते हैं। एक तो होता है एशियन कंट्रीज से, सब एशियन यूरोपियन अपने अपने कंट्री में वो सिलेक्ट होकर आते हैं। अगर उसमें ना हो तो वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं क्वालिफाइड, तो उसमें जाकर क्वालिफाइड होना पड़ता है। तो जाकर ही वो ओलंपिक में खेल सकते हैं। What needs to be done additionally to generate interest and promote sports in the country in general and in Sikkim specifically? मेन तो हमें अभी स्टेट में अभी कंपटीशन हो रहे हैं एक गेम के क्षेत्र में। हर गेम के लिए हम लोग मतलब इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सब एक होना चाहिए। एक तो सरकार करते रहेंगे और नीचे वाला कोचेस नहीं करेंगे। कोचेस कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं करें, बच्चे नहीं कर रहे, बच्चे नहीं कर रहे तो पेरेंट्स नहीं करेंगे, ये भी मुश्किल है। तो कोऑपरेट होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक फेडरेशन, एक एसोसिएशन, एक मतलब सरकार, तब जाकर हम लोग मतलब आगे हम लोग कैसे मतलब प्रमोट होगा, बच्चों को आगे कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सोच सकते हैं। एकेडमी होना चाहिए, एकेडमी कंपटीशन होगा तो नेशनल में मेडल होगा, नेशनल में मेडल होने से फिर जाकर नेशनल कैंप में रहेगा तो इंटरनेशनल का प्लेयर्स होगा। Where do you see the future of Indian boxing? इंडियन बॉक्सिंग सिर्फ मैं नहीं सोचती, लेकिन हमारे इंडिया में जितना भी खिलाड़ी हैं
हम लोग यही सोचना चाहिए कि एक खेल के क्षेत्र से हम लोग फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। खेल खेलने से सिर्फ हम लोग आगे पहुंचकर देखते हैं कि दूसरे ने मिला तो मुझे भी मिल ही जाएगा, ये नहीं सोचना है। तो इंडियन बॉक्सिंग का बच्चे लोग अभी यही है। एक तो हुआ मैरी कॉम हमारा इंस्पायर है, जिसने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ले चुके हैं। एक बच्चों के माँ होकर भी अभी भी वो खेल रहे हैं, ओलंपिक अभी रिप्रेजेंटेटिव उसका हार्ड लक है क्योंकि उसने मेडल नहीं हुआ, फिर भी वो अभी भी फिट है। मतलब इतने सोचने में बहुत है, इतना उम्र जाने के बाद भी, लेकिन बच्चों अभी बॉक्सिंग में और भी करना है। तो ये देखकर इतना जोश में है कि सच मैं सोचती हूँ कि बॉक्सिंग बहुत फ्यूचर अच्छा है। इसी तरह बहुत लड़के अच्छे अच्छे बॉक्सर हुआ है, ओलंपियन खेला है, अमल खुद चुके हैं, मेडल हो चुके हैं। इन लोग को फ्यूचर देखकर फ्यूचर इतना ब्राइट हुआ है कि अभी जहाँ हुआ था वो उससे तो बहुत आसमानी हो चुका है, उससे किसी चीज का भी मतलब अभाव नहीं है उन लोगों में। तो इसी तरह हमारे बॉक्सिंग मैं सोचती हूँ कि आगे जाकर बहुत अच्छा ही होगा, और बॉक्सिंग का करियर के साथ साथ में दूसरा का गेम भी शायद अच्छा ही होगा। You mean the future of Indian boxing is bright. Lastly, please share your message for aspiring boxers. मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी बॉक्सिंग खेलना चाहते हैं और जो भी खेल रहे हैं, बॉक्सिंग के साथ साथ में दूसरा गेम भी खेलते हैं, जो बच्चों लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग सच में खेल लीजिए और आपने जो अपने लाइफ है, फ्यूचर है, आगे के लिए सोच लिए। जहाँ तक आपने टारगेट किया है वो टारगेट को हासिल करने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि आप चांद में तो पहुंच ही जा रहे हैं, आदमी पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सूरज में पहुंचने के लिए कोशिश कीजिए। अगर वहाँ ना हो तो आप चांद तक पहुंच जाओगे। और दूसरे बार मैं बताती हूँ कि डिसिप्लिन के बारे में, बच्चों को पास डिसिप्लिन होना जरूरी है हर क्षेत्र में, पढ़ाई में हो, घर में खाना, बैठने, सोने, इवन बाथरूम जाने का भी डिसिप्लिन होता है। तो हर कोई में डिसिप्लिन होना जरूरी है। हमेशा मैं बच्चों को ये 3 डी अल्फाबेट एक है लेकिन 3 वर्ड्स है, ये हमेशा मैं यूज करती हूँ और मेरे लाइफ में भी इसी के यूज करने की वजह से मैं शायद सफलता हुई हूँ। और लवलीना को भी मैंने ये बताई हूँ कि ये 3 वर्ड्स है, एक तो डिसिप्लिन और एक डेडिकेशन एंड एक डिटर्मिनेशन। ये 3 वर्ड्स हमारे लाइफ में अगर हमने इस्तेमाल किया, यूज किया, तो हम पक्का सक्सेस हो जाएंगे। तो एक अब्दुल कलाम सर का जो बताए हुए वर्ड्स मुझे बहुत ही पसंद है। ये मैं हमेशा मैं अपने दिल में रख के, मतलब ये रख कर मैं उनको सल्यूट करना चाहती हूँ। जो भी इंसान, जो भी बच्चे, बड़े जो भी हो, जब सोते हैं तो वो सपना मत देखिए। अगर सपना देखना है तो जाग कर देखिए, आंख खोल कर देखिए, वो सपना बोलते हैं। सोकर जो सपना देखते हैं वो सपना नहीं, और देख कर देखते जो सपना देखते हैं वो सपना है बोलकर मैं बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ। आप लोग अपने फील्ड में पढ़ाई के साथ साथ में जो पढ़ाई करते हैं और वो जवान पढ़ाई खत्म हो चुके हैं, वो भी कोई भी डिसिप्लिन में आप पार्टिसिपेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ में एक हिस्सा बना लीजिए और आगे बढ़िए। You heard an interview with Mrs. Sandhya Gurung, a former boxer from Sikkim and now the state's Dronacharya awardee coach. Before we wrap up the program, let's enjoy a melodious song from Nagaland. The song is in Ao dialect and narrates a folk tale on Nijaba, which was believed by the forefathers of the Nagas before Christianity came to the state. With this, we come to the end of this program. Do join us next week to hear more enchanting stories from the northeast of India. Bye-bye.
This program was presented by Abhishek Mukhopadhyay, scripted by Suparna Saikia, produced by Sharmila Goswami, and assisted by Kamlesh Mudgal. This was brought to you by the News Services Division of All India Radio.